Good morning, children. How are you all? I hope all of you are good. Children, yesterday we performed 2 activities and today we'll start the class with 2 more activities. Before starting activity number 3, let's understand what is air pressure. Air exerts pressure. You have learned earlier that the earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. The gravity of the earth pulls this atmosphere downwards. Thus, air pushes downwards on everything. The weight of this air acting on a surface causes air pressure. Earth's gravity pulls the atmosphere downwards. आप सब ने पहले पढ़ा हुआ है कि अर्थ को चारों तरफ से एयर की एक लेयर कवर करके रखती है, सराउंड करके रखती है और इस एयर की लेयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और जो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो एटमॉस्फेयर को नीचे की तरफ पुल करती है। सो चिल्ड्रन, जो एयर होती है वो सब चीज़ों को नीचे की तरफ पुश करती है। As a result, air pushes downwards on everything. और यही जो एयर का वेट होता है जब ये किसी सरफेस पे एक्ट करता है तो वो एयर प्रेशर बनाता है। So, Earth's gravity pulls the atmosphere downwards. Children, today we'll do an activity on air pressure. We'll do activity number 3 given on page number 55 in your EVS textbooks. Take a plastic bottle and make some holes at the bottom. Fill the bottle with water and put the cap on its mouth. What do you see? Does the water come out of the holes? No. Now remove the cap. What do you find? Water starts flowing from the holes. Why? When we remove the cap, the air enters the bottle and causes pressure on the surface of water. The water starts coming out through the holes. So children, इस एक्टिविटी में हमने देखा जब तक बॉटल की कैप टाइटली बंद रहती है तब तक पानी होल से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन जैसे ही हम बॉटल की कैप लूज़ करते हैं तो एयर को बॉटल के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है और एज अ रिज़ल्ट व्हेन air enters the water bottle, it starts creating pressure and as a result water starts coming out of the holes. Children, now we'll have activity number 5 given on page number 55 to prove air helps in burning. For this activity, we'll be needing a candle, a glass and a matchbox. Children, if you are doing this activity at home, please do it under the supervision of your parents. इस एक्टिविटी में हम लोग कैंडल जलाते हैं और उसको एक एम्प्टी ग्लास से कवर कर देते हैं, मतलब ग्लासेस को अपसाइड डाउन रख देते हैं। You will find that after few minutes the candle will stop burning. This activity proves that air is needed for burning. So it is proved that air helps in burning. Children, please perform these activities only under the supervision of your parents. Thank you.